आज हमें ज्वाइन किया है मुल्ला अब्दुलसलाम ज़عیف साहब ने, जो अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में सफीर भी रह चुके हैं। मुल्ला साहब, बराह रास्त मैं आपसे सवाल की तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि अफगान तालिबान को इतने अरसे के बाद आखिर अब क्यों ये शमूलियत की दावत दी गई है कि वो अफगानिस्तान में सियासी निज़ाम में शमूलियत की दावत कर लें, शमूलियत कर लें और सियासी निज़ाम में शामिल हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Kabul administration, including American in Afghanistan, they are unsuccess in the issue of Afghanistan, which they were believing, and they came, which they said they came for that. The first thing what they wanted, and they said to the people of Afghanistan, they want to finish or vanish which they were believing the terrorists in Afghanistan. Secondly, they wanted to, what they said to the people, that they want to build and rebuild Afghanistan as a very economic strong country. The third, which they were believing, and they said to the people of Afghanistan, and they will bring the stability in security to the people of Afghanistan. And I think in these three purposes which they said to the people, they are unsucceeded. And they are facing with the problem in Afghanistan. In the Taliban, they are insisting against the occupation in Afghanistan. अच्छा मुल्ला साहब, ये बताइएगा कि क्या तालिबान अपनी जो माजी में उन्होंने जद्दोजहद की और तकरीबन 9/11 के बाद से लेकर 10-15 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और मुसलसल मुज़ाहमत करते रहे, और अपने तालिबान कमांडर भी इस राह में और बड़े कारकुन भी इस राह में, इस मुज़ाहमत की जद्दोजहद में उन्होंने शहीद भी करवाए। आप क्या समझते हैं कि क्या तालिबान अब इस सियासी निज़ाम में शामिल हो जाएंगे? क्या वो अपने जो माजी के शुहदा हैं उनको भुलाकर वो ये समझते हैं कि उन्हें अब सियासी निज़ाम में शामिल होना चाहिए? The Taliban, they are not participating right now, and they didn't answer positively to what they call to the Taliban. And still the Taliban, they are not recognizing the Kabul administration as the legal government of Afghanistan. And the purposes of Taliban is known to them, and they didn't call for this problem too. And this is two problems. Secondly, an independent Afghanistan, withdrawal of all foreigners from Afghanistan by any name. Secondly, the Islamic government in the Islamic establishment of government in Afghanistan. Still, the government or the administration of Kabul, I think they didn't think about this problem. मुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि तालिबान को सियासी धारे में लाने के लिए सबसे ज्यादा कौन मुतहर्रिक है? क्या अफगान हुकूमत ये चाहती है कि अफगान तालिबान को अब सियासत में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर अमेरिका और आलमी ताकतों की ये ख्वाहिश है, या फिर इसमें जो पड़ोसी ममालिक हैं बिलखुसूस पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अफगान तालिबान इस सियासी निज़ाम में शामिल हो जाएं ताकि अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए? Which I know, the Pakistan, they increased their pressure on Taliban. Even they detained some very important figure of Taliban in Pakistan. But Pakistan is also under pressure of the United States and the world community and the allegation of Afghanistan. The Taliban, they are under pressure, but they will not accept what the Pakistan say and what the Pakistan want. I think the future in the region, this is clear. The Taliban don't want any kind of deal to any country, including Pakistan, Iran, and anyone. They want to resolve the problem with American, with the people of Afghanistan in the future, independently, indirectly. मुल्ला साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ बहुत हद तक जो है
वो हिमायत करता रहा है, और अफगान तालिबान की जो हुकूमत ख़त्म हुई है और अफगान जो मौजूदा काबुल हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान हमेशा से यह हामी रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह से अमन आ जाए। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सियासी निज़ाम में शमूलियत के लिए पाकिस्तान भी हिमायत कर रहा है, पाकिस्तान भी अफगान तालिबान को मजबूर कर रहा है? I think the Kabul administration, they are trying to bring Taliban to join with the Kabul administration like they did with the Hikmatyar. And the Pakistan, they are supporting this idea also, and they are cooperating with Afghanistan too. I think, but they are not honest. The pressure is increased on Pakistan by American. The American, they know what is going on in the region, which is not for the benefit of United States. And the region, and they raise their voice what the American want in this region. And for this reason, the American, they are scared what will happen to them, like happened to Russia and Afghanistan. And they want to resolve the problem by this way. But anyway, I don't think the Taliban, they will allow them to stay in this region safely. आखिर में ये बताइएगा मुल्ला साहब कि अफगानिस्तान में अमन कैसे आ सकता है? ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें आजमाया जाए और जिन पर अमल करना जरूरी है कि जिसके जरिए अफगानिस्तान में अमन आ सकता है? What is possible to bring security and stability to Afghanistan? This is only two things. First, withdrawing the foreign force and the finishing the occupation in the region, and stopping the interfering of foreigner in Afghanistan. Second, the very inclusive understanding, negotiation, and dialogue between all parties, all important figures in Afghanistan, and the management of future and the system of the future government in Afghanistan. आखिर में हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये चार मुल्क मिलकर एक तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसकी इफ्तिताही तकरीब 23 फरवरी 2018 को अफगानिस्तान के सूबे हिरात में भी हुई, और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शरीक हुए। तो इस मंसूबे के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये मंसूबा किस कदर अहमियत का हामिल है, और अफगान तालिबान क्या इस मंसूबे की हिमायत करते हैं? If you mean the project of TP, and this project was starting by Taliban, and especially I was the Deputy Minister of Mine and Industries at that time. We have several meetings about this project in Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, and some other countries like Yunnan and Argentina and some other countries. This project is a long-term supporter for the region economy, region security, and region understanding, sharing economy in the region. It's a very good project, and the Taliban, they are the founder of this project, and they are supporting. No doubt in that. मुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।